certain other points which you can talk about. Xt is real means a signal could be a complex signal also, but here this property is leading towards the real signal. That is, if xt is real, then C of n is equals to conjugate of C of minus n. And C naught must be real. This is the point which we can talk about if xt is real. C naught must be real, and along with Cn equals to conjugate of C of minus n. Next is if xt is even, the Fourier coefficient must be real and even. This is again an important point. If xt is even, the Fourier coefficient must be real and even. And if xt is odd, the Fourier coefficient must be imaginary and odd. And with that, the C naught must be 0. This is what we already discussed. For odd signal, C naught is 0. And this is the other properties that already written. So the two important points we got from here. If xt is real and even, the Fourier coefficient will be real and even. If xt is real and odd, the Fourier coefficient will be imaginary and odd, along with C naught is 0. These kind of properties you can use while solving the different numerical problems where they are mentioned about the specific kind of signal, whether the signal is even or real, whether the signal is even real and odd kind of things. The next property is the multiplication. Suppose we have two signals of two periodic signals, xt and yt, with their Fourier series coefficient an and bn. And if I multiply these three signals in time domain, then how their Fourier series coefficient will change. So here the condition is that the xt and yt has to be periodic signal along with their Fourier series coefficient an and bn. If you multiply these two signals in time domain, something like xt and yt. So of course xt and yt has to be a periodic signal, and let's say it has a new Fourier series coefficient, that is C of n, which can be find out by summation of L equals to minus infinite to infinite AL Bn minus L. Regarding this, we will do some numerical problems also. Next property is differentiation. For example, if xt is having their Fourier coefficient Cn, then dy by dt of xt will have a Fourier series coefficient j n omega naught multiplied by Cn. And if we do the integration of signal, then the Fourier series coefficient must be divided by Jn omega naught. So depending upon whether you are differentiating the signal or integrating the signal, you will have this. Next property is related to the conjugate symmetry. Conjugate symmetry is something like, suppose if you have a signal xt with Fourier series coefficient xn, cn, and if you have a complex conjugate of that signal, that is conjugate of xt, the Fourier series coefficient will be conjugate of C of minus n, right? So C of minus n conjugate will be the Fourier series coefficient related to the conjugate of the signal. The last property, and it is one of the most applicable property of this Fourier series, and most of the time you will find some numericals related to this property in your competitive examination questions like Indian Engineering related to that. Look at this property. This property So your voice is breaking actually. which will give you the idea about the overall power of a signal of a periodic signal. So let's say the power of a periodic signal
x of t, which you already know, this is 1 by t mod of xt square dt. This is what we have already studied in unit number 1, that the average power of a signal is nothing but 1 by t integration over one period mod of xt square dt. Right. But now if you have the Fourier series coefficients of a periodic signal, so you can be able to know about the overall power of a signal by using this expression. The power of a signal is 1 by t integration of mod of xt square is equals to summation of n equals to minus infinite to infinite mod of cn square, where cn is the Fourier series coefficient of that particular signal x of t. So that means this equation relates you or gives you the idea that the overall power of a periodic signal can be found out in time domain by means of 1 by t integration of mod of xt square, or otherwise if you have the Fourier series coefficients of a particular periodic signals, even then you will be able to know the power of the signal by using this mathematical expression. I already told this is a very important properties regarding the numerical setup. Now we will have some numericals related to this, and then we talk about other things. So numerical number 1 is if xt is a continuous time periodic signal with fundamental time period t and Fourier series coefficient ak, find bk in terms of ak if vk is the Fourier series coefficient of gt, which is a d by dt of xt. Given that the integration of xt is equals to 2, which is from t to 2t. क्वेश्चन क्या है, xt आपके पास एक कंटिन्यूस टाइम पीरियडिक सिग्नल है whose fundamental time period is t and it has the Fourier series coefficient ak, and let's say bk is the Fourier series coefficients of another signal which is gt equals to d by dt of xt. Given that the time period or integration from t to 2t xt dt is not written, you can write dt over here also. Simply this is integration of xt over a time period from t to 2t equals to 2. So what you have to find out bk in terms of ak. पता कर सकते हैं? सर अभी आपने कहा था ना वो ए के विल बी बी के ओवर सॉरी बी के इंटू जे एन ओमेगा नॉट, जे एन ओमेगा नॉट, ठीक जे है, के ओमेगा नॉट सॉरी. ओके. तो और कुछ भी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें या उसी से काम चल जाएगा? सर ये टाइम पीरियड चेंज किया मतलब टी से टू टी का इंटीग्रेशन किया, इसकी वजह से कुछ चेंज होगा शायद. इससे कुछ निकल के आएगा, देखो क्या निकल के आ रहा है. सी ये जो ए के निकल के आ रहा है और यू कैन फाइंड आउट बी के इन टर्म्स ऑफ ए के, तो जो ए के जो आ रहा है उसमें दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर के इक्वल्स टू 0, क्योंकि के इक्वल्स टू 0 पर ए के इनफाइनाइट हो रहा है. मैं स्टार्टिंग से बताता हूं. लेट्स से xt एक सिग्नल है जिसका मैंने फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट लिखा हुआ है ak. नाउ इफ आई डिफरेंशिएट दिस सिग्नल, राइट, सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस सिग्नल मींस gt को मैंने लिया हुआ है d by dt of xt. Let's say it is having Fourier series coefficient bk and which is nothing but this is jk omega naught of ak. So we have a relation between bk and ak. So you can write down ak equals to bk by j omega naught k.
but this signal is not defined, this AK is not defined for k equals to 0. Why? Because if you write k equals to 0, so this leads to infinity. So for k equals to 0, you have to look for the relation which is given to Other you. value. Yes. So what is the relation? Relation is the generalized relation for AK is what? 1 by t integration over a time period xt e to the power minus jk omega naught t. But if you want to find out a naught, so you have to put k equals to 0. So the exponential power becomes 0, so it becomes 1. So simply we have a relation a naught equals to 1 by t integration over a time period xt dt, which is given what? Which is given already given 2. to 2. So you can replace this quantity by 2. So a naught becomes 2 by t. So you can say your a naught is 2 by t for k equals to 0. And for rest of the values, this is bk divided by jk omega naught. Is it clear to everybody? Yes, sir. Okay, now let's talk about another question which is on your screen. Read the question and then find out. The question is if xt is a real and odd. Remind this thing. I'm talking about xt is real and odd. Time period is 2. The Fourier series coefficient equals to ak. And ak equals to 0 for mod of k greater than 1. And one more condition is given to you 1 by 2, 0 to 2, mod of xt square dt equals to 1. Specify two different signals that satisfies these conditions. So first you tell me what हमें इससे निकालना क्या है? We are looking for a signal x of t in such a way which satisfies these conditions. And since they are asking about xt, so xt could be possible that it could be two signals which can satisfy this condition. So we need to find out those two signals. सर तो ये जो रिलेशन दिया है ना 1/2 0 to 2 इंटीग्रेशन समथिंग 1 देर का है, तो इससे हम cn निकाल सकते हैं, 2 cn आ जाएंगे हमारे पास. नहीं, सो बताइए क्या आ रहा है, जरा अटेम्प्ट करिए, स्टार्ट करिए इसको. ओके सर. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, पहली लाइन में आपको लिखा है xt रियल और ऑड है. सो यू कैन लुक फॉर द प्रॉपर्टी. रियल और ऑड होता है तो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट किस नेचर का होता है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है. अगर xt रियल एंड ऑड है तो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट इमेजिनरी एंड ऑड होंगे और उसका जो सी नॉट होगा वो हमेशा 0 होगा, ये ध्यान रखना है. For xt is real and odd, the Fourier series coefficient will always be imaginary and odd with c naught equals to 0. Now you can start your numerical. Okay, tell me what are the conditions that you found from these. क्या क्या मिलेगा? xt अगर real and odd है, so how will you comment on Fourier series coefficient? They must be imaginary and odd. ठीक है. और यस सर. अगर कोई सिग्नल ऑड है तो उसके a के और a माइनस के में क्या रिलेशन है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कल बताई थी, अगर आपको याद हो. सर ak इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस के. वेरी नाइस. ठीक है, तो अब मुझे बाकी चीजें और बता दीजिए. ए के इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए माइनस के, और ए नॉट का भी इंफॉर्मेशन आपके पास है. ए नॉट कितना होगा? 0, बिकॉज द यस. सिग्नल इज रियल एंड. तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है एंड यू हैव वन मोर रिलेशन, हाफ ऑफ 0 to 2 mod of xt square dt
यहाँ पर किसका यूज कर सकते हैं? दिस इज इंडिकेटिंग फॉर विच प्रॉपर्टी? सर वो अभी आपने बोला ना पावर वाला CN स्क्वायर के इक्वल हो पार्सेवल्स जाएगा। Parseval's theorem. यस यस। Parseval's theorem. You have the use of Parseval's theorem. What is the Parseval's theorem? This is the Parseval's theorem. 1 by t 1 by t integration of mod of xt square dt equals to summation of k equals to minus infinite to infinite mod of ak whole square. Now can you tell me how many ak do you find from here? क्योंकि ak के बारे में और भी कुछ लिखा हुआ. ak is 0 for mod of k greater than 1. How many ak do you find? 3. सर 2 sorry 3 3 Minus how? 1 0 and 1. 1 0 and minus 1 for 1 1. 0 and minus 1. Yes sir. So we have a But for mathematical 0 it equation. is also 0. We have a mathematical relation. मैंने लिख दिया है 1 by t 0 to t mod of x t square this. ठीक है, a k स्क्वायर. तो ऑलरेडी हमको दिया गया है. क्या दिया गया है? a k 0 है and sorry a naught is already 0 and a k is 0 for mod of k greater than 1. So what are the possibilities? इसमें Only possibilities जो ये A1. a1 और a minus 1 ही हम रख सकते हैं. Yes. ठीक है, because rest of the k, this ak is 0 and for a naught is already 0. So we have only क्या मिलेगा? Mod of a1 A square minus plus mod of a minus 1 square equals to 1, and this you can write 2 of mod a1 square because एक condition और आपको पता है, a k equal to minus of a of minus k. This is what you already know. So you have a relation 2 of a1 square equals to a1, sorry 1. So this is, now you can have two possible conditions. क्या possible conditions होंगी? किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा why I have written j over there. j रूट के बाहर है वो. कौन बता सकता है why I have written j? सर इमेजिनरी बनाने के लिए उसको. क्योंकि ये कंडीशन हमें पता है, अगर सिग्नल रियल एंड ऑड है तो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स हमेशा इमेजिनरी और ऑड होंगे. सो इन ऑर्डर टू मेक इट इमेजिनरी आई एल पुटिंग j. j इसके मल्टीप्लिकेशन में है. ठीक है, 1 बाय, जैसे यहाँ 1 बाय रूट 2 लिखा है, यहाँ देखने में लग रहा है डिवीजन में है, बट दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन. सो फाइनली what are the Fourier series coefficient you will have? a1 equals to minus of a minus 1 equals to 1 by root 2 and j is in multiplication, or a1 equals to minus of a minus 1 equals to minus of 1 by root 2 j, which is satisfying this equation 2 of mod a1 square equals to 1. आप लोग चेक करके देख लीजिए उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. कर रहे हैं सेटिस्फाई? सर वो तो माइनस ऑफ 1/2 हो जाएगा ना. कौन सा? सर जैसे A1 का स्क्वायर करेंगे ना, तो वो वो तो a1 का सर. स्क्वायर नहीं है, मॉड ऑफ a1 का स्क्वायर है. ओके ओके सॉरी सर सॉरी. नहीं फिर भी एक्चुअली सर फिर भी वो 1/2 J ऑफ स्क्वायर ऑफ J हो जाएगा ना, तो वो तो -1 हो जाएगा. नो 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 नो, इफ यू पुट दिस इनसाइड मॉड के अंदर जो रहेगा वो तो क्या रहेगा, माइनस कहां से आ जाएगा? वो तो सर पॉजिटिव ही रहेगा. तो बट जब इसका स्क्वायर करेंगे तो J का स्क्वायर हो जाएगा ना, या फिर बट वो वो मॉड के अंदर A रहेगा. स्क्वायर का मॉड है. हाँ, सर वहां पे आपने A के मॉड का स्क्वायर लिखा है ना, तो वो तो सर -1/2 आ जाएगा ना. क्या लिखा है? एक एक का
mod of AK then square of it. AK A1 is equal to 1 by root 2j. तो इसका अगर मॉड लेंगे तब भी यही रहेगा और स्क्वायर करेंगे तो 1 by 2j स्क्वायर हो जाएगा, वो तो -1 होता है ना. What you want to say? तुम बोल रहे हो कि वो C के स्क्वायर मॉड होना चाहिए. I mean A के यस स्क्वायर सर. देन मॉड. हाँ, अगर पॉजिटिव रहना है 1 को तो वो ऐसा होना चाहिए सर. या फिर सर ये जो कोएफिशिएंट्स है इसमें कुछ प्रॉब्लम है शायद. सॉरी, कोएफिशिएंट A1 की इसमें प्रॉब्लम कोएफिशिएंट हो में नहीं सकती. तो सर वो स्क्वायर देन मॉड होना चाहिए आई थिंक. या फिर सर अगर आप कुछ क्वेरी, अगर आप कुछ बता सके तो. अगर इसको मैं पहले स्क्वायर करूंगा यस सर. देन मॉड लूंगा तब तो वो तो सही आ ठीक रहा है तुम्हारे. है. Yes, sir. अच्छा, पहले अगर मॉड ले लेंगे फिर स्क्वायर करेंगे तो तब तो सर वो नेगेटिव रह जाएगा ना, क्योंकि जे के ऊपर मॉड का कोई फर्क पड़ नहीं रहा है. स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा. just wait for 1 minute. ओके सर. What is the meaning of mod over here? तो सर पॉजिटिव वाला है या फिर वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो उसका मॉड लेते हैं वो है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है. ओके सर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, because we are dealing with यस सर. complex numbers. Huh? करेक्ट सर. Okay, so I think you got this A1 and A minus 1. Fine. यस सर. Now the question is that how will you find the signal actually? तो यस सर. सिग्नल को हम कैसे पता कर सकते हैं? योर सिग्नल इज नथिंग बट x of t can be written as summation of k equals to minus infinity to infinity a k e to the power j k omega naught t. So those many a k you are having, you can put over there. So we are having only 2 a k. This is a1 and a minus 1, right? But since we are यस. having a1 and a minus 1 two different way, right? So we can have two signals which can satisfy these conditions. So the signal number 1 is 1 by root 2j e to the power j, and this is all about since we are taking k equals to 1 and time period t equals to 2. So omega is nothing but this is 2 pi by t, so this is 2 pi by 2t, and I'm putting minus over here because of this property. So I'm having this plus root 2 sine pi t. This is one possibility. If you look for another one, I mean this condition, so you can have minus root 2 sine pi t. So these are the two possible signals which can satisfy the above condition. Is it okay for everyone? यस. Now we have some more questions on that. So before going into the
other questions, I would like to tell you one important properties regarding Fourier series and LTI system. Then we will talk about other numericals, right? How you can deal with the LTI system along with Fourier series and why, how we want to take the benefit of this. Let's say we have a LTI system with input is xt, the output is yt, and the impulse response is ht. And these three signals are having their Fourier series coefficients like AK, PK, and CK, right? So we know the frequency response of the system of LTI system h of j omega minus infinity to infinity h of tau e to the power minus j tau d tau. And we have the relation for Fourier series coefficient, let's say x of t is summation of k equals to minus infinite to infinite ak e to the power j k omega naught t, where ak is 1 by t 0 to t x of t e to the power minus j k omega naught t. Now similar things you can write for h of t. Bk is 1 by t 0 to t h of t e to the power minus j k omega naught t, right? And you know one thing very well, that if you convolve these two, what is yt? Yt is nothing but the convolution of xt and ht. And according to the property of this Fourier series, if you convolve this xt and ht in time domain, their Fourier series coefficients becomes t, pk, and ak. This is according to the property that I already told. So now the question is that how will you write y of t? Since for a LTI system, the y of t is nothing but the convolution of xt and ht. So if I want to write y of t, which is again a periodic signal, in terms of Fourier series coefficient, so you can use this thing very easily, that y of t is equals to k of minus infinity to infinity ak h of j k omega naught k e to the power j k omega naught t, where this entire term ak h of j k omega naught k is the Fourier series coefficient of y of t, which is nothing but this is c of k. Now look at the important things regarding this. Suppose you know the Fourier series coefficient of x of t, which is your ak, and if you know the frequency response of the system, that is h of j omega, and if this h of j omega can be calculated at omega equals to omega naught k, this is shown over here. This ak is nothing but the Fourier series coefficient of input x of t. H of j omega naught k is the frequency response of the system, which is calculated at omega equals to omega naught k. If you multiply these two things, right, which is going to be the Fourier series coefficient of output y of t, which is your ck. So we can say very easily, if you are applying a periodic signal to a LTI system, right, and if you want to know about y of t, and if you have the knowledge of AK and the frequency response of the system as well, if you multiply these two terms and you just calculate this h of j omega at omega equals to omega naught k, then this overall term will become the Fourier series coefficient of your output signal y of t. I hope you might have understand what I want to say. किसी को समझ में सर आया? सॉरी बट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? Okay. इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप यस बोलते जाइए. एक्स ऑफ टी एक इनपुट है, वाई ऑफ टी एक आउटपुट है, और उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एक्स टी है, एच टी है. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एलटीआई सिस्टम. इज इट ओके? करेक्ट सर. लेट्स से एक्स टी का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ए के है और वाई ऑफ टी का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट सी के है. फाइन. ओके सर. सो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात अगर हम करते हैं, whenever you talk about the frequency response of LTI system, which is nothing but h of j omega minus infinity to infinity h of tau e to the power. This is what I am already told, right?
ओके और x of t के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से है. x of t can be written as in this way, where ak is can be written in this way. लिख सकते हैं. ओके सर. Now vk I am going to write 1 by t 0 to t h of t. dk को भी हम लिख सकते हैं Fourier series coefficients. And according to the periodic convolution, किसका periodic convolution? टाइम डोमेन में एक प्रॉपर्टी है. Because how will you get the y of t? You will get the y of t y convolving xt and ht. Fine. करेक्ट सर. So y of t is nothing but the convolution of, and convolution of these will give you another Fourier series coefficient which is capital T, ak and bk. Right? So we have the value Okay. of ak and bk. We have the value of ak and bk. करेक्ट No value. And if you put the value of bk and ak over here, so the entire term, this t, ak, bk is nothing but this is c of k. राइट सर. Right? So if you put these terms, all these terms over here for bk and ak, then you will get this entire term. Because ak आपको already पता है, यहां पर लिखा हुआ है. ठीक है. और bk के बारे में ये है. And how you want to relate this term? Impulse response से मैं इसको relate करूंगा. यहां पर एक टर्म आपको दिख रही होगी e to the power minus j k omega naught t, और यहां पर टर्म दिख रहा है सिर्फ e to the power minus j omega naught. So if I put this omega को मैं omega naught k रख दूं, so I will have the same term. यस सर. Right? So that means if the frequency response has to be calculated at omega equals to omega naught k, so you will have the same term. वही frequency response मिल जाएगा जो bk मिल रहा है मुझे. इस टर्म को देखो आप लोग ध्यान से, bk का टर्म और frequency response ऊपर लिखा हुआ है. अगर इसमें मैं सिर्फ क्या पुट कर दूं, ओमेगा ओमेगा की की जगह, जगह ओमेगा नॉट. ठीक है, तो ये 1 by t मल्टीप्लाई होगा, तो t ऑलरेडी है तो दैट विल बी कैंसल आउट. ठीक. तो अल्टीमेटली व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एलटीआई सिस्टम, कि अगर हमें किसी भी एलटीआई सिस्टम के आउटपुट का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट चाहिए, तो सिर्फ मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए. एक तो इनपुट का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट पता हो, और दूसरा उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पता हो. और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को हम किस पे कैलकुलेट कर लेंगे? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट के पर. तो अगर ओवरऑल आपसे कोई पूछता है कि व्हाट विल बी द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ आउटपुट बाय टी, नाउ दिस ak multiplied by h j of omega naught k will be the Fourier series coefficient of yd, which is your ck actually. ठीक है. हेलो. यस सर. करेक्ट. Okay, fine. Now let's talk about the numerical I was talking about. सर ये जो एच के था ना, सॉरी एच जे ओमेगा टी, Yes, yes. ये आपने अलग से बताया था ना? h of j omega ये मैंने बताया था आपको. ओके सर. ये मैंने बताया था जब when I was talking about sinusoidal steady state response. फाइन सर. फाइन. ठीक है. तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे लिए काफी आसान होगा इसको सॉल्व करना. क्यों होगा? लुक एट दिस. एक 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 छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, देन आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग. ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट्स से इसी क्वेश्चन की बात करते हैं. अ कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम, इफ इनपुट इज अ साइनसॉइडल देन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द सिस्टम. ठीक है. एक एलटीआई सिस्टम का एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है आपको, dy dt ऑफ yt प्लस 4/t xt. सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होगा. द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस of a LTI system is always
known as h of j omega, and h of j omega is nothing but this is y of j omega divided by x of j omega. Y of j omega is the response of output signal, x of j omega is the Fourier transform of the input signal, and h of j omega is known as the Fourier response. तो ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी गई है, पहले इसका मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा, इवन दो मैंने अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको नहीं पढ़ा है, बट राइट नाउ this is the requirement of this question. Simply I am writing down the Fourier transform of the above differential equation. So the Fourier transform of this equation will be j omega y of j omega plus 4y of j omega equals to x of j omega. So I want to have h of j omega. So h of j omega is a ratio of y j omega by x of j omega. This is 1 by j omega plus 4. ये h of j omega आ गया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि अगर मुझे y ऑफ t लिखना है, ठीक है, सो हाउ विल यू राइट y ऑफ t, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो y ऑफ t लिखने के लिए मैंने आपको क्या बताया, किसी भी एलटीआई सिस्टम के लिए आपको दो चीजें जानना जरूरी है, एक तो उसका AK, दूसरा h of j omega. If you know the AK and if you know the h of j omega, if you multiply these two, only then you will be able to know the Fourier series coefficient of the output signal, that is y of t. इनपुट का अगर आपको Fourier series coefficient पता है, सिस्टम का frequency response पता है, and if the frequency response is to be calculated at omega equals to omega naught k, only then you will be easily able to know about the Fourier series coefficient of y of t, that is AK h of j omega naught k, right? तो इसमें अगर आपको कुछ चीजें निकालनी है, फॉर एग्जांपल यहां दिया है ओमेगा नॉट इज 2 पाई, ठीक है, और दूसरा आपको एक कंडीशन दी गई है कि आप जैसे ही ओमेगा नॉट को यहाँ पर 2 पाई रखेंगे, you will be easily able to calculate the other things, ठीक है। तो आपने ओमेगा नॉट की वैल्यू आपको पता चल गई है 2 पाई है, and you want to calculate let's say a1 or a minus 1, that means you are aware about k. So omega नॉट भी आपको पता है, k भी आपको पता है, anything you can calculate about the, तो जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, they may ask about the Fourier series coefficient of the output of a LTI system. So you can say the Fourier series coefficient of a LTI system is the Fourier series coefficient of input multiplied by the frequency response of the system calculated at omega equals to omega naught. And if omega naught is given to you and you want to calculate a specific element, let's say यहाँ पर a1 और a minus 1 को calculate किया है, तो ये आपका था 1 upon j omega plus 4, इसको ओमेगा की जगह 2 पाई रख दिया है, k की जगह 1 रख दिया है, so you can have these kind of answers, ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों को करके खुद से बताना है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इसका डिस्कशन बंद करें। क्वेश्चन देखिए, LTI system with impulse response h of t is equals to e to the power minus 4 mod of t. Find the Fourier series coefficient of by t, ठीक है। और xt के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, xt के बारे में दो पॉसिबिलिटीज है, एक xt आपको दिया गया है, एक ट्रेन ऑफ पल्सेस है और दूसरा भी ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस है, बट दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर, ठीक है। सारी चीजें आपको बताना है, अल्टीमेटली आपको कैलकुलेट करना है Fourier series coefficient of y of t, and which is nothing but the Fourier series coefficient of x of t multiplied by the frequency response of the system calculated at omega equals to omega naught k. तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना पड़ेगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको दिया गया है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा, और Fourier series coefficient xt के लिए निकाल सकते हैं क्या क्या होगा। लेट्स डू इट। सबसे पहले मुझे h of j omega कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का फॉर्मूला आपको पता है,
ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, आप देख सकते हैं। दिस इज एच ऑफ जे ओमेगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एच ऑफ टाउ ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डीटा। एक बार मैथमेटिकल फॉर्मूला आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर है। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एच ऑफ टाउ ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डीटा। इक्वेशन आपको दी गई है, दिस इज द इक्वेशन, ई टू द पावर माइनस 4 मॉड ऑफ टाउ। यस, कितना आ रहा है? कैलकुलेट किया है, क्या आंसर है? सर हेलो। एच ऑफ जे ओमेगा आ रहा है 1/4 प्लस जे ओमेगा प्लस 1/4 माइनस जे। ओके, 1/4 प्लस जे ओमेगा प्लस 1/4 माइनस जे ओमेगा, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये आ गया एच ऑफ जे ओमेगा। अब हमें एक्स टी का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालना अंडर टू कंडीशन। तो पहली कंडीशन में जो एक्स ऑफ टी दिया है, इट इज अ ट्रेन ऑफ पल्सेस लाइंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और टाइम पीरियड इसका 1 है। ठीक है, तो टाइम पीरियड अगर 1 है तो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट कल अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकाला था मैंने, याद आ रहा है आपको किसी? यस सर, वो -(t/2) से +(t/2) तक हाँ, जाना पड़ेगा उसमें। तो आंसर कितना आया था? तो आई थिंक x(t) के इक्वल ही आया था, x(k) के इक्वल। ए के कितना आया था? ए के आई वांट टू नो अबाउट या ए के आया था 1/t। हाँ, यस सर, 1/t। इट वाज 1/t, और टी यहाँ पर कितना है? 1 टी 1 है, तो दिस ए के विल बी 1 ए के विल बी 1, राइट? तो ए के हमारा 1 हो गया है, तो ओवरऑल वाई टी का जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या होगा? ए के मल्टीप्लाइड बाय एच ऑफ जे ओमेगा h of कैलकुलेटेड j0। एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट के। नाउ व्हाट अबाउट ओमेगा नॉट ओवर हियर? अगर टी हमारा 1 है तो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा? और 2π। 2 pi, very nice. So what will be the answer? आंसर ये होगा 1/4 प्लस जे ओमेगा ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग? ओमेगा नॉट के। सो 2π। ओमेगा नॉट दिस इज 2 पाई के, राइट, प्लस 1/4 माइनस जे 2 पाई के। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एच ऑफ जे ओमेगा। तो सेम ही रहेगा क्योंकि सिस्टम वही है, सिग्नल चेंज कर दिया है। सिग्नल क्या है? नेक्स्ट सिग्नल है n equals to minus infinite to infinite minus 1/2 the power n delta t minus n.
इसके लिए मैंने जो टाइम पीरियड लिखा है वो 2 लिखा है। हाउ, कौन बताएगा? सर वो 0 के बाद 2 पे वापस पॉजिटिव आ रहा है ना, चेंज कर रहा है ना डायरेक्शन। सिग्नल ड्रॉ करेंगे आप लोग, किस तरह की इंपल्सेस आएंगी? t इक्वल्स टू 0 पर क्या मिलेगा? -1। क्यों? सर वो नो डेल ऑफ टी हो जाएगा ना, t को 0 पे। अगर -1 की पावर 0 कितना होगा? 1। 1 ही तो आएगा। t इक्वल्स टू यस 0 यस पर 1 आएगा। यस सर। t इक्वल्स टू -1 पे कितना आएगा? -1। ओके, +1 पर? +1 पे फिर से माइनस वापस -1। 2 पर? 2 पर 1। तो इसको ड्रॉ करके आप इसका टाइम पीरियड बता सकते हैं, सिग्नल कहां से रिपीट कर रहा है? सर आफ्टर इंटरवल ऑफ 2। After interval of 2. That means the time period becomes 2. Fine. क्लास। तो टाइम पीरियड अगर 2 होगा इसका, then what about AK? AK निकाल सकते हैं क्या हम लोग? इसमें AK 2 आएगा, 0 आएगा जब K इवन होगा और 1 आएगा जब K ऑड होगा। ठीक है? When you write the mathematical equation of AK, so you will find that AK will be 0 when K is even and it is 1 for K is odd. ठीक है? तो फाइनली जो आउटपुट yt के लिए जो हमारा फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है, that will be 0 for K is even and K odd के लिए इसमें ओमेगा नॉट जो हो जाएगा वो पाई हो जाएगा, because T is 2. कितने लोग बता सकते हैं कि AK कैलकुलेट कर सकते हैं क्या वो लोग? ओके, यू जस्ट राइट डाउन द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ AK। क्या आएगा? कौन लिखेगा? फटाफट लिखो। AK इक्वल्स टू होता है 1/t 0 to t x of t e to the power minus j k omega naught t, राइट? तो टाइम पीरियड कितना है? 2, सो इट विल बी 1/2 0 to 2 x of t आपको पता है, x of t कितना है? कौन बताएगा x of t कितना है? एक टाइम पीरियड के अंदर कितनी इंपल्सेस आ रही हैं? बोलो भाई, शांत क्यों हो गए आप लोग? हाउ मेनी इंपल्सेस यू आर हैविंग बिटवीन वन टाइम पीरियड? भरत, हेलो, दो इम्पल्सेस आ रही हैं। कौन कौन सी? जो पिछली बार मैंने से आपको अगर एक 0 ट्रिक से बताई थी, ठीक है? द सेम ट्रिक यू हैव टू यूज। अगर आप ऐसे देखेंगे 0 से 2 के बीच में तो एक ही इंपल्स मिलेगी -1 की, ठीक है? बट इफ यू कैन टेक फ्रॉम एनीथिंग बिलो 0, लेट्स से -0.8 से 1.2, ये भी एक इंटरवल है 2 का। हेलो, करेक्ट सर। ये मैथमेटिकली मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। 1/2 यहाँ पर है, मैंने लिया -0.8 to 1.2। Now we are having two signals, two impulses. One is delta t, another one is minus delta t minus 1. Is it okay? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ओके सर। -1 है, ठीक है? And this is e to the power minus j
k ओमेगा नॉट आपका कितना आ जाएगा, दिस इज 2 पाई बाय टी और टी 2 है तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस जे के पाई टी डी टी. नाउ विद इन दिस इंटरवल these two are having magnitude of डेल्टा टी का 1 है और इसका -1 है, so this will be 1 by 2 1 minus e to the power minus j k pi, right? क्योंकि डेल्टा टी के लिए टी 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये 1 रह जाएगा और डेल्टा टी -1 के लिए t becomes 1, so I'll put t becomes 1, so it will be e to the power minus j k pi. So your final term will be 1 by 2 1 minus e to the power minus j k pi. Now you can see this term will be 0 for k even, this term will be 1 for k odd. किसी को डाउट है तो अभी पूछो मुझसे. अगर स्क्रीन पर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए. No doubt, sir. Fine. So this is the way you can calculate AK. Now once you know the AK, there is nothing left behind because you have to write simply the Fourier series coefficient output, which is AK multiplied by h of j omega calculated at omega naught k, which you can write simply. Okay, so this is how there are some other problems given in the sheet that you can see from your own, right? Most of the problems I have discussed. So from tomorrow onwards, I'll start your Fourier series for this in discrete time. The mathematical formula is different. The concepts are more or less same. So I want to end this meeting over here.